Kapil sir said that in '83 when we won the World Cup, it was never about the money; it was about the respect, and it's because of that respect you made this film. Sunil Gavaskar, Gordon Greenidge, Clive Lloyd, ऐसे लोग तो हमारे सेट पे घूमते रहते थे. Eyes change. I have seen I've seen from cut to camera his eyes change. उस दिन मैं जब आपकी फिल्म देख रही थी, it was a life changing moment for me because I suddenly was thinking to myself, यार, if this is the emotion cricket gives you, did I miss out on a large part of my life? लेकिन ये ऐसी एक फिल्म थी कि जो स्क्रिप्ट से ऊपर उभरने लगी. हर दिन जब हम शूट करते थे हमें एक महसूस होता था कि ये जो स्क्रिप्ट है या ये जो फिल्म है ये स्क्रिप्ट से भी आगे जाने लगी. Till then the mantra was थप्पड़ खाओ घर चले जाओ. Don't try and hit back. हेलो एंड वेलकम. मैं हूं मयंक शेखर. आप हैं एबीपी अनकट में और मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ लॉट्स ऑफ रियली पॉपुलर फिल्म्स, बजरंगी भाईजान, काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क एंड ऑफ कोर्स मोस्ट रिसेंटली 83 क्रिकेट फिल्म. और उस फिल्म के अगर हम स्कोर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस ने उसे 83 और 100 जरूर दिया है. कबीर खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच. कबीर, एक सोच है बहुत लोगों में, मेरे में तो जरूर है, कि कोई फिल्म जब आती है रिलीज होने से पहले आप एक सेलेक्ट ऑडियंसेस को दिखाते हैं, चाहे वो प्रेस हो या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, तो जितने जल्दी आप दिखाते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाउ गुड दैट फिल्म इज. यूजुअली थर्सडे को लोग दिखाते हैं, वेडनेसडे को लोग दिखाते हैं. यू शोड द फिल्म 83 ऑन अ मंडे, मतलब कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट. ऑफ कोर्स रिव्यूज एंड सोशल मीडिया में बातें होने लगी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. काफी कॉन्फिडेंट थे आप इस फिल्म के बारे में इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैड मेड. जी, आई थिंक हम बहुत खुश थे इस फिल्म के साथ. हमने जो फिल्म बनाई थी, बिल्कुल जो जो एक होता है ना, ये जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप यू सेट आउट टू मेक समथिंग, और कभी कभी क्या होता है कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है कि उस स्क्रिप्ट को कितना आप बचा के एक फिल्म बना सकते हैं. लेकिन ये ऐसी एक फिल्म थी कि जो स्क्रिप्ट से ऊपर उभरने लगी. हर दिन जब हम शूट करते थे हमें एक महसूस होता था कि ये जो स्क्रिप्ट है या ये जो फिल्म है ये स्क्रिप्ट से भी आगे जाने लगी है. ये एक इसका एक हम बोलते थे दिस इज ब्लेस्ड बाय द गॉड्स ऑफ क्रिकेट, क्योंकि हम जब शूट करते थे तो एक रैंडमली सुनील गावस्कर, गॉर्डन ग्रेनिज, क्लाइव लॉयड, ऐसे लोग तो हमारे सेट पे घूमते रहते थे. कपिल देव साइड में बैठे हुए हैं, मदन लाल वहां पे कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे यार ये फिल्म मतलब बन क्या रही है समझ में नहीं आ रहा. मतलब ट्रूली ब्लेस्ड बाय द गॉड्स ऑफ क्रिकेट. एंड देयरफॉर जब फिल्म कंप्लीट हुई, आई थिंक वी वर सुपर कॉन्फिडेंट. बहुत हम इस फिल्म को लेके बहुत खुश थे. तो हमने बोला इसको जितनी जल्दी शेयर कर सकते हैं करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई, एज यू सेड, हमने एक प्रेस स्क्रीनिंग मंडे को करी, जो नॉर्मली या ज्यादातर थर्सडे या फ्राइडे सुबह को होती है. एंड वी वर टोटली ओवरवेल्म्ड. जिस किस्म का प्यार हमें मिला इस स्क्रीनिंग के बाद, थोड़े से हम लोग एक्चुअली थोड़े से चौंक गए, क्योंकि इस किस्म का एक जो एक तरफा एक जो होता है ना बिल्कुल यूनानिमस लव, ये इससे पहले मिला नहीं है कभी. ना मुझे ना रणवीर और मैं दोनों बात कर रहे थे. रणवीर मुझसे पूछता था, यार सर आपको मिला है कभी ऐसे, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला. मैं बोलता हूँ रणवीर मुझे तो नहीं मिला है. तो दोनों बिल्कुल ही ऐसे टोटली ओवरवेल्म्ड. But what were the compliments, if you can, because एक तो compliment जो है, जो common है, कि इसको कंपेयर किया गया कहीं ना कहीं लगान से, कहीं ना कहीं चक दे इंडिया से. फॉर इंस्टेंस, क्या आप शिमित अमीन से मिले, या आशुतोष गवारीकर से मिले, या आमिर खान से मिले, या शाहरुख खान से? डिड दे एवर से एनीथिंग टू यू? बिल आशुतोष का तो आज ही फोन आया, अभी 2 घंटे पहले फोन आया. एंड ही वाज वेरी एफ्यूसिव एंड ही सेइंग, यार कि मतलब कमाल तुमने किया. ही सेड लगान में मैंने मेरा कंट्रोल था, क्योंकि मेरे तो फिक्शनल कैरेक्टर थे, मैं उनके साथ जो करना चाहता था कर सकता था. तुम्हारे तो असली कैरेक्टर्स है, तुम ज्यादा आगे पीछे जा भी नहीं सकते. और तुमने इस किस्म की एक फिल्म बनाई है जिसमें मतलब जिस तरीके से स्क्रीन प्ले चल रहा है, जिस पेस से चल रहा है, और ड्रामा भी है और थ्रिल्स भी हैं, और उसके बीच में ऐसा इमोशन चल रहा है कि बाय एंड में सबको रोना आ रहा है. So I was very happy with his reaction. I think everybody has been very effusive. Industry में तो I must say कि industry वाले have been very very loving towards this film. लेकिन सबसे strongest जो reactions आए हैं मुझे मयंक, वो आए हैं उन लोगों से जो क्रिकेट कभी देखते नहीं थे. और वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि असली में जो एक स्पोर्ट्स फिल्म होती है ना, वो स्पोर्ट्स के बारे कभी नहीं होनी चाहिए. वो एक होनी चाहिए ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. तो वो जो मुझे मैसेजेस आए हैं, और मैसेजेस इस फिल्म के ना नॉर्मली जैसे आपने बोला हमने पहले भी कुछ सक्सेसफुल फिल्में बनाई है, तो मैसेजेस आते हैं कि ग्रेट फिल्म, एंटरटेनिंग, सुपर्ब,
कांग्रेचुलेशन। ऐसे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं हमें, हमें मैसेजेस आ रहे हैं 2-2 पेज के, एक अजीब सा एक इमोशनल कथार्सिस हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पिक्चर है, या इज इट द टाइम्स वी आर लिविंग इन, इज इट द is it everything that we've gone through collectively as a nation, where we अचानक एक फिल्म आती है जो आपको एक ऐसा एक नजारा दिखाती है जो आपके कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का हिस्सा है, and suddenly you're proud to be an Indian, suddenly you're proud of these boys, you're suddenly understanding the true meaning of patriotism. यार ये होती है patriotism. You don't need a counterpoint or a context. Just be happy that you love your country and see these boys what they're doing for the country. तो I think इस किस्म के बहुत रिएक्शंस आए हैं, लेकिन एक मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे दिमाग में अटक गया है, फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन. शी सेड कि मैं क्रिकेट, इट वाज नॉट लाइक आई डिसलाइक क्रिकेट, आई हेटेड क्रिकेट. जब मेरे घर में टीवी लगाते थे और क्रिकेट देखने लगते थे तो मुझे रोना आ जाता था, मैं भाग जाती थी, आई वुड गेट वेरी अपसेट एंड आई वुड सल्क फॉर डेज. एंड शी सेड उस दिन मैं जब आपकी फिल्म देख रही थी, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई सडनली वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार इफ दिस इज द इमोशन क्रिकेट गिव्स यू, डिड आई मिस आउट ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ? क्या मैंने अपने जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा खो दिया है? क्या मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था? वो जब मैंने पढ़ा मैसेज, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. और इस किस्म के जो मैसेजेस आ रहे हैं रोज, मतलब मैं अगर अपने फोन को साइलेंट पे ना रखूं तो हम ये इंटरव्यू ना कर पाए. रणवीर भी मुझे कल यही बोल रहा था, सर मैं तो हॉलिडे पे हूँ, मैं पावर बैंक नहीं ले गया हूँ अपने साथ, मेरा तो दोपहर तक फोन ही खत्म हो जाता है क्योंकि इतने फोन आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं. और he is also an emotional person. He's saying मुझे कम से कम 3-4 बार दिन में I break down and I start crying because I've never experienced love like this. और मैं सोचता हूँ कि मुझे जिंदगी में ऐसा फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा. And that's really what it's been, Mayank. I agree with you. In that sense, कबीर, कि आपने किसी को 30 मिनट्स का मैच दिखा दिया फिल्म के अंदर, राइट, जिसको क्रिकेट ही पसंद नहीं था. दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू लाइक टू गेट. एंड ऑफ कोर्स अगर हम लगान से कंपेयर करें तो वहाँ आई थिंक 27 मिनट का मैच था, ऑफ कोर्स फिक्शनल मैच था. आपने वो रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है इन दैट सेंस. आई डोंट थिंक किसी फिल्म में इतना लंबा क्रिकेट मैच देखने को हमें मिला है इससे पहले. वाज दैट समथिंग दैट वाज काइंड ऑफ जो आप सोच रहे थे कि यार इतने लंबी चलेगी ये मैच, लोग, बिकॉज लगान में ये बहुत बड़ा थॉट था कि लोग देख पाएंगे कि नहीं इतने देर तक. ये क्या ये थॉट था आपके लिए कभी? बिल्कुल. जब मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे दिमाग में था कि यार देखो क्रिकेट कितना दिखा पाएंगे इसको. ऑफ कोर्स मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि पिक्चर जो है वो सिर्फ जून 1983 के 25 दिन की कहानी होगी. मैं बचपन लव स्टोरी उसमें नहीं जाने वाला हूँ. मैं वो 25 दिन की कहानी सुनाऊंगा, फ्रॉम द टाइम द टीम लैंड्स इन लंदन टू द टाइम व्हेन कपिल लिफ्ट्स अप द वर्ल्ड कप. तो वो तो तय कर लिया था. अब उसमें ये कि यार क्रिकेट दिखाना है, कितना दिखाएं, सारे मैच दिखाएं, नहीं दिखाएं. फिर मैंने एक सोचा कि यार एक बहुत सिंपल चीज है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे मैचेस में देखता हूँ कि कहाँ पे किसकी ह्यूमन स्टोरी कहाँ पे चल रही है. तो मैंने बहुत स्टडी किए सारे मैचेस को, सारे स्टैटिस्टिक्स को, किसने परफॉर्म किया, किसने नहीं परफॉर्म किया. फिर एक बहुत बड़ी लग्जरी मेरे पास ये थी कि मेरे पास टीम का एक्सेस था. मैं हर उसमें जाके फिर मैं बैठ जाता था उनके साथ कि ये इन्होंने ये परफॉर्म किया, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये लोग स्टोरी टेलर्स नहीं है, तो आप जब इनके साथ बैठते हैं और पूछते हैं अच्छा बताइए क्या हुआ था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक शुरू किया तो एक पूरी कहानी आपने सुना दी, आपके सारे सीन हाथ में आ गए. उनको पता ही नहीं क्या स्टोरी होती है और क्या नहीं स्टोरी, तो आपको बार बार खरीदना पड़ता है. जैसे बल्लू सर का मैं एग्जांपल दूंगा. बल्लू सर हमारे कोच थे, टीम 83 के कोच बने. उन्होंने सारे लड़कों को ट्रेन किया है, 1.5 साल ट्रेनिंग करी. ही इज मेड देम इनटू सच फैंटास्टिक क्रिकेटर्स. तो हम उनके साथ मजाक करते हैं कि सर आईपीएल टीम ही खोल लो, थोड़े पैसे मिल जाएंगे. तो अब जैसे 4 महीने से हम बात कर रहे हैं बल्लू सर से, कभी इस बारे, इस इंसिडेंट उस इंसिडेंट के बारे में. देन एक बार मैं उनके साथ बैठा था ऑफिस में और मैं सेमीफाइनल्स के स्कोर्स देख रहा हूँ, परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ. मैंने कहा बल्लू सर सेमीफाइनल में आपने कुछ नहीं किया. तो कहने अरे कैसे करता है यार, सगाई टूट गई थी. ऐसे क्या? सो ही सेड सगाई टूट गई थी ना. तो ऐसे सर ये आप मुझे कब बताने वाले थे? तो सर इसमें क्या बताने वाली बात है यार? आई सेड बोले सर यही तो बताने वाली बात है. तो देन व्हेन यू गेट लीड्स लाइक दैट, देन आई सेड यार मैं ना मैच को एज अ मैच नहीं दिखाऊंगा. मैच मेरा बैकड्रॉप हो जाएगा. जिस प्लेयर की एक पर्सनल स्टोरी आर्क चल रही है ना, उस पे मैं फोकस करने वाला हूँ.
और जब मैं वो करूंगा ना तो ऑडियंस फिर क्रिकेट नहीं देख रही है, ऑडियंस फिर देख रही है उनका ड्रामा। फिर वो चौका छक्का मारा, इट्स नॉट अ 4 और अ 6, इट्स अ मोमेंट ऑफ अ ट्रायम्फ। या आउट हो रहे हैं, इट्स अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर। And I think that's what has worked. Right. People have started seeing the cricket matches as pieces of drama, not Hmm. as cricket for cricket. Right. And that is, I think, the reason why, children who don't watch cricket, or predominantly a lot of women who don't watch cricket are getting so emotionally moved by it, and saying, I'm like Mini, my own wife is not Hmm. really a cricket buff or watches cricket, when matches are happening. And after the first screening, when I showed her the sort of the rough cut, she said, for me, the most exhilarating parts are the cricket matches. Hmm. Which was for me, I said, oh wow, if it's working for her, I think it will work for a lot of people who तो don't are अगर हम not cricket. अप्रोच की बात कर रहे हैं कबीर, तो आपका अप्रोच एक तरह से एनेक्डोटल रहा कि बिल्कुल इनके साथ समय बिताया जाए, सारे लेवल प्लेयर्स के साथ, एंड क्या इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, राइट? जी एंड ऑफ कोर्स आप सब कुछ तो नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स जी आल्सो वेरी टाइट फिल्म, टाइटली yeah. एडिटेड फिल्म। सो आर देयर स्टोरीज जो आप नहीं डाल पाए इस फिल्म में, प्योरली बिकॉज या तो वो फिट नहीं होता है या लंबा कर देता है उस फिल्म को? बोथ रीजंस। मतलब फिट तो हम कर, आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट एक मास्टरी हो गई थी कि एनेक्डोट को लेके उसको कैसे स्पिन करके डाल दे स्क्रीन प्ले में। अल्टीमेटली यही था। शुरुआत में तो क्या हुआ, पहले 4-5-6 महीने जब इन लोगों के साथ टाइम बिताया तो बहुत खुशी हुई। और यार एनेक्डोट के बाद एनेक्डोट, मतलब शॉक्ड कि ये सब रिकॉर्डेड नहीं है, इतने एनेक्डोट्स आ रहे हैं। तो एक भंडार हमारा बन गया एनेक्डोट्स का। फिर उसके बाद एक रियलाइजेशन हिट हुई कि भाई साहब आपके पास एनेक्डोट्स तो 1000 मिल गए हैं, इनका स्क्रीन प्ले कैसे बनेगा? इट्स नॉट, यू हैव टू वीव देम थ्रू एज इन अ स्क्रीन प्ले। तो उसमें पूरा एक साल निकला। लेकिन तब भी हाँ, कुछ कुछ मोमेंट्स हैं, जो जोक्स हैं या मोमेंट्स हैं जो दे कुडंट फाइंड द वे। एंड आई कभी भी मैं सोचता हूँ यार ये डाल देना था ये जोक, एक दो। एनीवन like for example, there's a very iconic exchange between again a British journalist and Kapil sir, which I wanted to put it. It was almost there, then I decided no, it's one of those things that I'm still debating, डालना चाहिए था नहीं चाहिए। कि जब वो successful होने लगे तो एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा that you've now become the darling of the country and everybody looks at Kapil Dev as this master. So he said, when do you think the next Kapil Dev will emerge in India? तो कपिल देव ने बोला था, no sorry, father dead, mother old. No, so no Kapil Dev. Things like these, such classic anecdotes, but yeah, some of them didn't find their way. But to look at the flip side, Kabir, अगर आप ऐसी फिल्म बनाते हैं, which in a sense जितने लोग हैं उस फिल्म में, they're still around, इतने साल हो गए हैं, it's also like it's a big moment for them. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे, जो शायद रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जब आप इतना क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं, does that suffer at some level? कि यार ये नहीं दिखाओ यार, अभी बहुत साल हो गए, अब ये सब मत दिखाओ, अब नहीं जाना उस पे। I'm so glad you asked this question, Mayank, because I want to put this. It has been an unbelievable experience with these people. इतना एक्सेस था हमारे पास, हम रोज फोन कर सकते थे। इनके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है आज भी। इट्स कॉल्ड, all of them who were members of that team, it's called Champions Forever. It's a WhatsApp group where they exchange notes. तो हम एक क्वेश्चन पूछते थे, वो व्हाट्सएप चैंपियंस फॉरएवर पे जाता था और उसके जवाब आ जाते थे। इतना एक्सेस था। लेकिन एक आदमी ने कभी ये नहीं बोला कि हमें स्क्रिप्ट दिखा दो, हमें पिक्चर दिखा दो। कपिल देव ने एक सिंपल चीज बोली कि हम फिल्म तब देखेंगे जब पूरी फिल्म बन जाएगी, जब सारी टीम एक साथ बैठेगी, तब हम फिल्म देखेंगे। उस किस्म का ट्रस्ट, उस किस्म की सिक्योरिटी कि आप सोचिए, आपने अपना पूरा मतलब अपनी कहानी सुना दी है, अपने करियर की क्राउनिंग ग्लोरी की कहानी सुना दी है। आपने कभी एक बार ही नहीं पूछा कि हमें कट दिखा दो, हमें फिल्म दिखा दो, हमसे ओपिनियंस ले लो। ये कभी नहीं होने वाला है, ना इससे पहले हुआ है, मैं ना होगा। हमें मालूम है व्हाट हैपेंस जब ये बायोपिक्स और कमर्शियल स्टोरीज बनती हैं, कि किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस लेवल का इंट्रूजन होता है। These gentlemen are from different era. They're made of a different metal. And yes, it's not that we have, tried to. Firstly, there were fortunately not too many conflict points. I mean, one of the greatest elements of this team has been that they just gelled together. But where there were, which is the infamous sort of a little friction between Gavaskar and Kapil Dev, we have not shied away from it. We have put it over there. And all credit to somebody like a Gavaskar who could have easily said, क्या फायदा, ये हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है।
right? It's a small moment, but it's that moment that makes the film special. It's that moment that shows that, okay, this is a true chronicling of what happened at that point in time. And not one person involved ever said that, this was unnecessary or this or that. That's the greatness of this team. I'm till now, actually, honestly, Mayank, I cannot believe that we pulled off a film for 3 years and not once did they intrude into our creative space. And this is only an ode to the kind of people they are. Right, right. Also, जब चर्चा होती है ऐसी फिल्म की, and there's a lot of gossip that happens around films of this nature. पहले जो gossip होती है is about the money, right? कि जहाँ आप online जाएं तो आपको ये मिल जाएगा, आपको फिगर सही है कि नहीं, कि सबको equal payment मिला. I think 1.5 crore was what was paid to everyone, and then 10 crore Kapil Dev को मिला. Is that a correct figure, firstly? No, none of the figures are correct. It's, as I said, these gentlemen are a breed apart. None of this has happened. None of them have done this for money. They could have easily made much more money, selling their individual rights and selling their individual, a lot of them are icons, a lot of them are legends. You know what a Sunil Gavaskar to Indian cricket means. He could have easily sold his rights for many times the figures you're mentioning and done this. But no, I think they're just so I think they look upon 83 as a sacred moment in their lives, and money is not something that they're going to give it for. They just needed to know that this is going to be, made with a certain level of integrity, a certain level of credibility and hard work. And that's what Kapil sir said. He said, as long as you put in that hard work and we're seeing that, nothing else matters for us. And the first thing he actually said, to me when he met me, the very first time, he said, Kabir, I hope you're making a film about the team and not about me. So all these rumors, as you said, these are how our film Bollywood gossip columns work, right? Like, I think it's sort of good copy for them, but definitely very, very far from the truth. But usually जब पैसों की बातें होती हैं तो बॉक्स ऑफिस की बात होती है कि एक सोच होता है, एक लोग बोलने लगते हैं कि यार इतना बड़ा बजट है, कमा पाएगी कि नहीं, ये हिट होगी या फ्लॉप होगी, या अब ये कमर्शियल सक्सेस है कि नहीं. Was that something that you're facing after the first week? कि लोग कह रहे हैं कि यार फिल्म ने उतना अच्छा नहीं किया जितना करना चाहिए था, 300 करोड़ की फिल्म है, ये पहली तो बात की ये 270 crore की फिल्म है कि नहीं है. See, this is the problem, actually, Mayank, is this only, that when people, who are not even film literate, open up these little, websites and, begin by basically number crunching and then start giving you gyan on, how films should be made and how, films should be marketed. I mean, you can only laugh at the absurdity of these people doing that. Because they, when you do this kind of talk, what they don't realize is that actually you're harming the industry. You're not doing service to the industry. You're just harming the industry by bringing this kind of corrupted talk into the circles, which is based on no journalism with credibility. It's based on hearsay. It's not like they've actually made calls or they've actually asked for figures or they've actually even know what they're talking about. So it's really sad that these little sort of websites by, as I said, film illiterate people who have certain agendas in their mind sort of talk about this. And in the middle of the pandemic, I think I would come out across as a very small-minded person if I'm going to now suddenly start complaining about the fact that, oh, my theaters have shut down in Delhi, or there's 50% restriction here. But the fact of the matter, it is. We are living in a pandemic. We tried our best to release 83. We held on to it for almost 2 years to release it at a time when, things would be better. We did not know it's going to, creep on to us literally a day after our release. On the day of our release, that, there'll be states going to night curfew. By the day 4, a big territory will just shut down its theaters and all. But that's fine. I think, as Kapil sir said to me, I'll be honest, I was feeling a little down and out about it. I said, oh my God, why? It's such a wasted opportunity. But Kapil sir said that in 83, when we won the World Cup, it was never about the money. It was about the respect. And it's because of that respect you made this film. And the respect that you are getting for this film is what's going to see you for the next 40 years. So why even bother about which theater is shutting and which not? As long as people who are going into the theaters are loving it and coming out and showering love. And that's been absolutely unanimous, man. Whether you see it on the social media, or whether you see it from the love they're getting in the media itself. I've never experienced this. Where it's like, people are overcompensating and sending me love. I think people are, it's very emotional because, people are seeing that, okay, the pandemic is holding them back. The pandemic is not allowing the film to sort of in a certain way, earn money as much as it should.
So they are giving me extra love. And I feel, and I can see it. When I speak to when I speak to the journalists, I can see they're trying to reach out to me and say, "Hey, don't worry, you've made a great film. Don't worry what happens at the box office." And that's truly heartwarming. It's truly moving for me as a filmmaker when I start seeing that happen, because then I realize I've really touched hearts. Right. Of course, also it's been a long journey for you, Kabir, with this particular film. I think मुझे कभी कभी लगता था कि ये फिल्म आके चली भी गई है प्योरली बिकॉज कब से बातें हो रही हैं, आप कब से काम कर रहे होंगे उस पर. टेक अस थ्रू दैट जर्नी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कबीर, ये फिल्म जब आपके पास आई थी तो पहले एक अटैच्ड एक्टर थे उसमें. अर्जुन कपूर करने वाले थे इस किरदार को. एक अटैच्ड डायरेक्टर थे. जो स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, वहां से आपने क्या किया? टेक अस थ्रू दैट जर्नी. एंड ऑफ कोर्स जब आपने बनाई और आपको 2 साल वेट करना पड़ा, टेक अस थ्रू दैट एज वेल. So it came to me, I think in 2017 or end of 2016. That's when it initially the idea came to me. I think it was 2017. And at that point in time, Vishnu Induri, he's the one who started it 9 years ago here. Actually, the journey starts with Vishnu Induri 9 years ago. He used to run CCL, Celebrity Cricket League, and he went to Kapil sir and said, Kapil sir, why don't we make this film? And at that point, Kapil sir said, no, it's too early. Let some more time pass. But Vishnu sort of just went after him relentlessly, and then I think finally Kapil sir put it on that Champions Forever group, saying, guys, should we get a film done? And then it went through a journey. There was Sanjay Puran Singh Chauhan who wrote a draft, and then that I think went to Vasan Bala. These are all writers who have been credited in the film as writers. Vasan did a draft. Then it came to me. Then when I sort of read that, I realized, okay, a lot of it is based on internet research. So because at that point in time they didn't have the luxury of having access to all the players. So then I said, okay, it's a great starting point, but ultimately, it only the script will get made once I get access to all the players. That started. And then from there is where it really took off, because suddenly then the real life anecdotes started coming out. That's when the script started taking shape. It was a long process. I had to research for 2 years, close to 2 years, Mayank, because despite the fact that everybody says that everybody knows about 1983, everybody knows, there is actually very little material available on it. Unfortunately, as a culture, I think we don't archive. Even some of the journalists, a handful of the journalists who had ventured to go to England at that point in time and write, did not have copies of the articles that they had written. I finally, thankfully, Lords opened up its archives to me, so I found every article written on 83 at their archives. I used to spend days on end in London in the Lords archives, taking my notes and putting it all together. So it was a very long, arduous research process. I think it's one of those films where I can easily say that my documentary background really helped me, because it gave me the systems and discipline to approach and set up the structures for research to be conducted in a scientific way. Primary research, we would get articles, we would get names, and then go searching for those people, 35 years later, and actually find them. Those two gentlemen, the Tur and Gil, the Sikh, and his sort of sidekick friend who keep, running up behind the team, are actual real characters. I met them in London. They're still living in London. They're actually now friendly with Kapil Dev and are in touch with them. So to get those kind of, they told me about the clash with the skinheads outside Old Trafford. When India defeated them at the semi-finals. So these are the anecdotes that started suddenly making the story and making it so much larger for me than just the story of a team. Because I realized that this is not just the story of a team; it's the story of the coming of age of a nation. And in a certain sense, Pankaj Tripathi's dialogue, which we also used in the trailer, sums it up, where he says that 35 साल पहले आजादी जीते थे, लेकिन इज्जत जीतना भी बाकी है कप्तान. Is what the story of 83 is. That's what, early 80s, let's not forget, was a period of turbulent racism in England. South Asians, called by the generic term Pakis, were at the receiving end of a lot of violence. Also, apart from just prejudices and so for them, that's why for me that moment outside Old Trafford, where the gentleman Tur actually told me, he said, till then the mantra was thappad khao, ghar chale jao, don't try and hit back. He said, but that day spontaneously the 400 boys from Southall who had driven down,
just decided, no, we're not going to back down. When they came out with their holes and dancing onto the streets, and he said there were 300 to 400 skinheads waiting for them outside, across the road. He said, we just decided that today we have to give it back to them. So that shows a certain, shift in the way the Indians started thinking. Especially the diaspora. I think for the diaspora, it was even a bigger shift, because there's this beautiful anecdote that this very senior barrister of Indian origin in England, he told me. He said, I belong to a very affluent family. I went to a elite public school in England. But I was just one of the boys. I used to blend into the background. Nobody really sort of sought me out. And he said, but the day after this win, when I went back to school, he said that's the first time a bunch of English boys with stars in their eyes came to me and said, hey, aren't you an Indian? And he said it was not in a derogatory manner. It was with stars in their eyes, because it was cool to be Indian that day. Right. And that's what the film really is. But अगर आप इतना research करते हैं कबीर, and you're right, अभी अगर होता है ऐसा तो किताबें लिखी जाती. I don't think कोई particular किताब है which only chronicles those particular 25 days. And जब आप इतने सारे anecdotes सुनते हैं, obviously you feel कि यार इसको थोड़ा सा और in depth जाया जाए. Now you have the option. सीरीज का भी ऑप्शन है, कभी आपको लगा कि यार maybe this can also be extended further, like as a mini series या multi part series with multiple episodes, कि हमारे इतना material है, इसको justice कर पाएंगे कि नहीं? At the same time, keeping it commercial, as it were, never forget those emotions, it's a theatrical release. All those things are also important. So, see, I never thought of 83 as a series for the OTT, simply because I thought it's something that needs to be celebrated, on the big screen. I just felt there are certain films that lend themselves to a spectacle. There are certain films that just lend themselves to a certain scale. So I said, no, this is one of those stories that I really, really want to put out on the big screen. As a follow-up, yes, there is a mountain of research that is still there. There is so much that we have not, gone into. There is so much that, as I said, stories and anecdotes that didn't make it to the cut. So for the future, one can sort of consider that. But for this particular film, I was very clear from the word go that this is worthy of a big film, a big scale film that should be enjoyed on the big screen. And that's why we waited so long. And I hope with the time that is left, wherever the theaters are open, I know that the multiplexes and all the, theater owners are taking great precautions, and they, on a daily basis, we talk about how, they're taking precautions to make the environment really safe for the audiences. So I really hope wherever the theaters are still open, if people can sort of go and enjoy this, because anybody who's gone into the theaters is only raving about it. It's only the places where people are not going into the theaters that we're feeling, a little pulled down. But if people go back into the theaters and watch it, because it's truly a big scale entertainment. No, absolutely. And I think the other thing जो लोग बात कर रहे हैं जब थिएटर से बाहर आते हैं is of course रणवीर सिंह as कपिल देव. And सभी कह रहे हैं कि यार लगता है कि हम कपिल देव को ही देख रहे थे, रणवीर सिंह को नहीं. And I'm sure a lot has gone behind that as well, in terms of research, in terms of क्या वो shadow कर रहे थे कपिल देव को इतने महीनों तक, क्या वो footage देख रहे थे, was there a lot of work done on prosthetics to get his look right? Just briefly tell us how do we get Ranveer as Kapil Dev like so spot on? So it started off with me telling Ranveer very clearly on day one, Ranveer, it's not a lookalike contest. Right. So get that out of your mind. Having said that, now we will try and come as close as we can. But when I say as close as we can, I want you to get the persona. Let's not, get anal about the jaw and the nose and the teeth. We will do all that. But my one-line brief to Gaikwad, who has put together this incredible look for us for all the players, was I said, sir, there can be no prosthetics. These boys will be playing cricket for 10 hours a day. I cannot have prosthetics on them. Please go as close as you can with sort of minimal makeup for these boys. And that's what he's pulled off. If you really break down Ranveer's look, it's nothing more than a hairpiece, false teeth, and his lenses with that sort of, light chocolate brown eyes or that Kapil sir has. So I'm saying that's what it is. The rest all comes from his expressions.
And that ultimately is what makes a face. You know, people don't realize how much of it is actually the expression. People are talking a lot about makeup. Makeup is minimal. As I told you, there are literally 3 elements to the makeup. It's the way he has taken the expression. The man looks different. You know, Mayank, if you see his last 3-4 films, forget the fact that you think it's the same actor. It doesn't look like the same human being. His eyes change. I've seen from cut to camera, his eyes change. I can't explain what happens. I can't do it for you, but I have seen it. And it's believe you me, it's a surreal sort of a thing to watch when an actor hits that note. It's like it's almost it's unnerving. That shit, what just happened over here? And that's what he did. You know, the way he speaks, that I think the biggest compliment is Kirti Azad, right? He's member of that team. When the trailer came out, he called me and he said, you know, when that profile shot comes of where he moves forward towards the mic and says, "What as we here for?" He said, "I thought you got archival footage of that press conference. I did not believe that this is not my captain and this is Ranveer Singh." What, you know, better compliment than that? So that is something that, it's a very unique quality that Ranveer has. We have some really fabulous actors in this industry. I'm not taking anything away from them, but they don't have this ability. They don't have the ability of being able to change their voice, being able to change their face with just an expression to the extent that this boy does. जाते जाते कबीर खान, of course, 2 साल से आप वेट कर रहे थे, ये फिल्म इवेंचुअली थिएटर्स में आई. जब आप वेट कर रहे थे, क्वाइट ऑब्वियसली आप और भी चीज कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अदर फिल्म्स. हाल में सलमान खान ने तो अनाउंस ही कर दिया है, बट भाईजान ने बोल दिया कि बजरंगी भाईजान 2 बन रही है. व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम यू, कबीर? ऑफ कोर्स वी लुक फॉरवर्ड टू एवरीथिंग दैट यू डू. अगला आप क्या करने वाले हैं? So, to be honest, man, yes, of course, I'm working on ideas. I've said this often that the idea of a sequel has never really excited me, because for me, the reason to make that film should not be that it's a sequel of a successful film. The reason should be it's a great script. So therefore, when Salman has announced and he has said, and I know because Vijayendra Prasad sir has spoken to me also about it, he is working on a script, he's working on an idea. If that story excites both me and Salman, and we feel that, wow, this is what we should be doing, I would give my right arm to work with him if he's if he wants to collaborate again with me, because my collaboration with him has really sort of I'll be very honest, my position in the film industry would not be the same had it not been for my collaborations with him. But will it be for what is being called the sequel of Bajrangi or something else? I really don't know. So I think I'm going to spend January just sort of going through all the ideas that I've been working on, and then probably be able to decide ultimately what I start with. चाहे वो फिल्म कोई भी हो, कबीर, but I have to thank you for the entertainment. Thank you for 83, and wish you the best and a happy new year. Thank you so much, man. Happy New Year to you too. Take care.